जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा। टेररिस्तान कहने पर भड़का पाकिस्तान। भारत दूसरे देश का नाम बिगाड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान भारत की दुश्मनी पुरानी है। पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए आतंकी पैदा करता है, भारत में हमले करवाता है और भारत दुनिया को दिशा देने के लिए विकास करता है। और आज की तारीख में पाकिस्तान की पहचान खून खराबा, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर, उसामा बिन लादेन, लश्कर तैयबा, टीटीपी पैदा करता है और उनसे पैसे भी कमाता है। और अब जब दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्तान कह रही है तो पाकिस्तान को बुरा लग रहा है। आपको याद तो होगा ही, पता होगा कि 22 तारीख से अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन चल रहा है और पहले भारत ने अपनी बात उसमें रखी, फिर पाकिस्तान ने अपनी बात कही और जब अधिवेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तान राजदूत ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात पर ऐतराज जताया और कहा कि ये पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। I call on the representative of Pakistan for a second intervention. Mr. President, we had not intended to take the floor again. However, it is utterly shameful that India stoops so low as to distort the very name of a country, a member of the United Nations. Such language reflects neither maturity nor responsibility, but instead it exposes that India is frustrated and it exposes its pettiness on the world stage. Resorting to mockery of a sovereign nation's name is not just undignified. It is a deliberate attempt to malign and insult an entire people. This is not a local political congregation. By engaging in this kind of rhetoric, India diminishes its own credibility, showing the world that it has basically no substantive argument to offer. Only, I'm sorry to say, but cheap slurs which are not worthy of serious discourse. And India itself has been implicated in supporting and sponsoring terrorist activities beyond its borders. There are credible reports pointing to networks which are run by the intelligence agencies to destabilize neighboring countries. And this is unfortunate. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के राजदूत। लेकिन पाकिस्तान के राजदूत को गुस्सा इसलिए और ज्यादा उनका भड़क गया क्योंकि भारतीय राजदूत रेंताला श्रीनिवास ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कहा टेररिस्तान। I call on the representative of India. I thank you, Mr. President. It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. Pakistan's reputation speaks for itself. Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of Terroristan. I thank you, Mr. President. I call on the representative of... तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं भारत के राजदूत। आपको जानकारी होगी कि 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए अपनी बात रखी, लेकिन तीर सीधे पाकिस्तान के सीने पर जाकर लगा। एस जयशंकर ने कहा, बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी हुई है और वहां आतंकियों की न सिर्फ मेहमान नवाजी होती है बल्कि उनका खुलेआम गुणगान भी किया जाता है। जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र किया, जहां निर्दोष लोगों को सीमा पार से आए आतंकियों ने निशाना बनाया। उन्होंने इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ताजा उदाहरण बताया और कहा कि भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि भारत आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करता आया है और करता रहेगा। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो जयशंकर ने अपने शब्दों से एक स्पष्ट
और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे दिया। आतंकवाद का गढ़ सिर्फ एक है और वह है पाकिस्तान। जयशंकर के भाषण के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद को सामने भेजा। राशिद ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, ये बेहद अफसोसजनक है कि भारत इतना गिर गया है कि अब एक दूसरे राष्ट्र के नाम तक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। ये भारत की हताशा और अपरिपक्वता को दिखाता है। The intelligence operatives have been accused of financing and directing groups which are engaged in sabotage, in targeted killings across the world. And undermining regional stability and violating international law is a habit for India. Therefore, such actions basically expose the duplicity of its counter-terrorism claims, and they actually raise serious concerns about its role in fueling rather than combating terrorism. I thank you. तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर तमतमा गया है पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के राजदूत का ट्रांसलेशन करके आपको समझाते हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। भारत खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसकी खुफिया एजेंसियां पड़ोसी देशों को अस्थिर करने में शामिल हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 90,000 से ज्यादा जानें गंवाई हैं। हम खुद इस जंग का हिस्सा रहे हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे जयशंकर की बात पाकिस्तान को बुरी तरह चुभ गई। हम यहाँ पर जयशंकर की वो बात सुनाते हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। Namaskar from the people of Bharat. We are gathered here 8 decades since the founding of this unique body. The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace. Not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. Madam President, forces unleashed by history since the founding of the UN propelled this body forward. As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. The membership of the United Nations quadrupled, and the organization's role and remit grew significantly. In the era of globalization, its agenda evolved even further. Development goals took center stage, even as climate change emerged as a shared priority. Trade acquired greater prominence, while food and health access were recognized as essential to global well-being. Where security was concerned, the UN undertook peacekeeping operations and promoted disarmament discussions. As a result, the UN became a natural platform to debate key global issues. Madam President, we must ask ourselves today, how has the UN lived up to expectations? And just look at the state of the world. There are 2 significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? When a once-in-a-century pandemic hits us, we saw open discrimination in access to vaccines and to travel. Energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption
especially since 2022. Better off societies insulated themselves by having the first call. The resource-stressed ones scrambled to survive, only to hear sanctimonious lectures thereafter. When it came to trade, non-market practices gamed rules and regimes. The resulting concentration exposed the world to leveraging. तो फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान अब बुरी तरह बौखलाया और टेररिस्तान कहने पर भड़क उठा, उसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।